there? So I'll be sending you questions via WhatsApp, and you Sure. can. Right. Great. And we are live. So, hello everyone. This is Faiza Yousuf from WomenInTechPK. Sorry for a bit of delay. I did not have electricity. So, Azra Maqsood is here with us today. She's the COO of National Institute of Cardiovascular Diseases. Azra and I know each other for a very long time now, almost 6 years since WomenX. And Azra was part of the organizing team for the program, and I've learned a lot from her, and she's like a mentor for me. Azra is going to be delivering a session on work readiness, strategies, employability, resumes, and interviews. We already have around 20 participants live in the session who will be interacting with us, but other people can definitely ask questions on the Facebook session, and then we'll be able to respond to them. So over to you, Azra. Thank you. फाइजा, थैंक यू सो मच. अच्छा, किसी के माइक में से मुझे बहुत बच्चों की आवाज आ रही है. नॉट दैट कि आई माइंड दैट, बट इस वक्त प्लीज उसको म्यूट कर दीजिए सो दैट दूसरे लोग भी उससे डिस्टर्ब ना हो. देयर समवन जिधर पीछे बहुत सारे बच्चों की आवाज आ रही है. आई हैव म्यूटेड एवरीवन. ठीक है, ग्रेट. ओके, फाइन फाइन. लेडीज, आई एम सो एक्साइटेड कि मैं आज आपसे बात कर रही हूँ अबाउट समथिंग दैट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट. दो चीजें हैं जिनके बारे में मैं बहुत हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ. एक तो ये है कि मैं किसी भी तरह से यूथ के साथ काम कर सकूं, यंग लोगों को गाइडेंस दे सकूं, मेंटरिंग कर सकूं, उनकी कोचिंग कर सकूं. एंड द सेकंड कम्युनिटी दैट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू वर्क फॉर इज वुमेन. और उनके अंदर इन दोनों कम्युनिटीज में मैं सिर्फ वर्क रेडीनेस के ऊपर काम नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं एंटरप्रेन्योरशिप की भी जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स है उसके ऊपर काम करती हूँ. फॉर एवरीथिंग एल्स यू नीड टू नो अबाउट मी, प्लीज टच बेस विद फाइजा. और आखिरी वाली स्लाइड में मैं आपको कुछ अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के बारे में इंट्रोड्यूस करा दूंगी, सो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट. आज जो हम स्पेसिफिक बात करेंगे वो हम बात करेंगे अबाउट वर्क रेडीनेस स्ट्रैटेजीज. के ये वो टाइम है जब आप ऑलमोस्ट तैयार होते हो कि जी अब मैंने जाके जॉब शुरू करनी. बहुत सारे आपस में हम लोग होते हैं जिनकी एक माइंडसेट हो जाए लाइक मी. अगर आप मुझसे कहें कि जी जाके बिजनेस कर लो, मैं मेंटोर कर लूंगी, मैं साइड हसल उसको जरूर कर लूंगी, बट फॉर अ फुल टाइम मुझे शौक है. आई लाइक टू वर्क इन द कॉर्पोरेट. मैंने हमेशा नौकरी की है एंड आई एंजॉय डूइंग इट. और बहुत सारे बहुत सीनियर लेवल पे लेके आप जैसे यंग लोगों को इंटरव्यूज भी किया है, उनको ट्रेन भी किया, उनको मेंटोर भी किया है, कोच भी किया है, और उनको उनका करियर प्रोग्रेशन भी देखा है. बट टुडे हम जिस चीज की बात करें, हम बात करेंगे स्टार्ट में से कि जी वंस यू आर अबाउट टू ग्रेजुएट या अब आप ग्रेजुएट कर चुकी हैं एंड यू वांट टू लॉन्च योरसेल्फ इनटू द जॉब मार्केट, तो कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. सो हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की. आप ये याद रखें कि आपके करियर का या आपकी लाइफ का सबसे बड़ा जो ब्लॉक होता है, और वो ब्लॉक जो आपको तैयार करता है जॉब के लिए, इज नॉट अ गुड रेज्यूमे, इज नॉट अ गुड कवरिंग लेटर, वो इंटर्नशिप नहीं होती है. वो सब चीजें जरूरी बहुत होती हैं, यस दे हेल्प यू गेट वेयर यू वांट टू गेट, बट उन सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होती हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. क्या हमारे अंदर वो स्किल्स हैं, बिकॉज ऑफ दो स्किल्स एक एम्प्लॉयर इंटरेस्टेड है हमें जॉब देने में या नहीं है. ठीक है. और ये सारी जो स्किल्स होती हैं ये प्लीज याद रखें, ऑन द जॉब आपको नहीं कोई सिखाएगा. The bosses do not have the time to work with you on employability skills, and I'll just tell you वो होती क्या है. बॉसेस आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स के अंदर जो है सारी वो चीजें बताते हैं जो उस जॉब से रेलेवेंट होती हैं, उस जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी होती है. बट बहुत सारी स्किल्स ऐसी होती हैं जिनको हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, मैं स्पेसिफिकली इनको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कहती हूँ. ये स्किल्स हमें कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती हैं, हमें स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती है, बहुत कम. वो आप जो होते हैं ना आपके बड़े अमीर या एलीट स्कूल्स होते हैं या कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे करिकुलम के साथ साथ ये स्किल्स की डेवलपमेंट भी होती है.
बहुत सारों में नहीं भी होती है। सो मैं अस्यूम करती हूँ कि ये सारी स्किल्स एट द बैक ऑफ आवर माइंड हमें पता होती हैं, हमारे अंदर होती भी हैं। जब आप इनके बारे में मुझसे आज सुनोगे या मुझसे इनके ऊपर बात करोगे या व्हेन यू गो थ्रू द स्लाइड्स, आप रियलाइज करोगे आपके अंदर ये स्किल्स हैं, बट आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये स्किल्स एम्प्लॉयबल स्किल्स हैं, मतलब ये वो स्किल्स हैं जिसके थ्रू हमें नौकरी मिलने के चांसेस बेहतर होते हैं। So the first employability skill that I would like to talk about is getting along with and working well with other people. Um, बहुत बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी अपनी कुछ पर्सनालिटीज होती हैं, वो अकेले काम करते हैं और बड़े प्रोडक्टिव होते हैं। लाइक नेचुरली जो अकाउंट्स के लोग होते हैं वो अकेले काम करते हैं, ऑडिट वाले लोग होते हैं वो अकेले काम करते हैं, मतलब दे वर्क ऑन देयर ओन एंड दे आर मोर प्रोडक्टिव दैट वे। इसी तरह जब मैं डेवलपमेंट के लोगों को देखती हूँ, मैं एसईओज के लोगों को देखती हूँ, या मैं मेजोरिटी आईटी के लोगों को देखती हूँ, उनको दे आर एट देयर हैप्पी प्लेस, उनको अपना लैपटॉप दे दें, आप सिस्टम से कनेक्ट कर दें, राउटर्स बिठा दें उनके पास जाके, सर्वर रूम में उनको, ओह दे लव इट, ओके, और वो बहुत उसमें प्रोडक्टिव भी होते हैं। बट एक चीज याद रखें, हम एक लेवल तक इस स्किल के साथ काम कर सकते हैं वेयर the organization also thinks कि अगर अजरा मकसूद अकेले ये काम प्रोडक्टिवली कर रही है तो उसको अकेले छोड़ दो, लेट इट डू इट। लेकिन मेरी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है कि मैं लोगों को साथ मिला के चल सकूं, बिकॉज आप ये याद रखें कि अकेले हम 99% काम एक एक एज तक, एक प्रोजेक्ट की एक लाइफ तक एग्जीक्यूट कर सकते हैं। काम एग्जीक्यूट करने के लिए वी नीड टू वर्क विद पीपल, हमें टीम्स में काम करना होता है। तो अगर आपके अंदर ये स्किल नहीं है, जहां आप लेट्स से शॉर्ट टेम्पर्ड है, आपके अंदर लोगों को सुनने की आदत नहीं है, आप लोगों को जजमेंट, आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा बहुत जल्दी पास कर देते हैं, या यू जस्ट डोंट लाइक समवन, होता है ना लाइफ में हमें कोई नहीं पसंद होता, कोई रीजन नहीं होता उसका, बट उसकी शक्ल देख के दिल करता है उसको, आई जस्ट वांट टू ब्लडी पंच दिस पर्सन, बट नो, दिस इज समथिंग वी कॉल्ड वर्किंग रिलेशनशिप्स। ये याद रखें, लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ हमें सिर्फ वर्किंग रिलेशनशिप रखनी, 9 से 6 तक उनके साथ काम करें, 6 बजे के बाद आप जैज प्ले करें, वो अपनी बेकिंग करें, यू शुड केयर। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारी स्किल होती है कि हम किस तरह, हाउ डू वी गेट अलोंग विद पीपल, हाउ डू वी वर्क विद पीपल। और आइडिया यही होता है, गेटिंग अलोंग का मतलब नहीं है हम पहली जमी हो रहे हैं और उनके साथ पिकनिक्स और पार्टीज करें, नो। उन वर्क आवर्स के अंदर हमारा एटीट्यूड और हमारा बिहेवियर ये होना चाहिए कि हम एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करके अपने काम भी कर सकें, उनके थ्रू भी काम कर सकें, और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकें। और कोई कोई रीजन नहीं होता है, यस बीच में आप दोस्तियां भी कर लेते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो जाते हैं, व्हिच इज ग्रेट, इट्स गुड न्यूज, बहुत लॉन्ग रन में आपके काम आता है। बट फॉर नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बहुत बड़ी क्वालिटी जो कि एम्प्लॉयर्स आपके अंदर आपके रेज्यूमे को देख के आपको जज कर रहे होते हैं, is your quality to work in teams, to execute in teams, to develop a mindset जिसमें I am open to working with other people and I like working with other people. So that is quality number one, getting along with and working with other people. Two, being reliable and dependable. अब reliable और dependability से क्या क्या मतलब होता है, ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जब हम छोटे होते थे हमारे घर में बहुत ज्यादा डोमेस्टिक सपोर्ट नहीं होती थी, एंड माय मदर वुड ऑलवेज से कि ठीक है खाने की टेबल लग गई थी, अब खाने की टेबल उठाना भी तुम ही लोगों ने। तो मेरी जो छोटी बहन थी वो बर्तन बहुत तोड़ती थी, सो माय मम ऑलवेज यूज्ड टू से प्लीज इससे बर्तन नहीं उठवाना, तुम इसको पास कोई और काम इससे करवा लो, बट प्लीज बर्तन समेटना तुम्हारे। तो हियर इज द कंपोनेंट ऑफ रिलायबिलिटी एंड डिपेंडेबिलिटी। माय मदर डिड नॉट ट्रस्ट माय सिस्टर क्योंकि मेरी अम्मी के फेवरेट डिनर सेट की चीजें वो तोड़ देती थी। सो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में रिलायबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी का क्या मतलब होता है जी, आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं। आप अगर अपना, मैं आपको छोटा एग्जांपल देती हूँ एक प्रैक्टिकल लाइफ के साथ। आपसे कहा जाता है आप इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, ठीक है, अब इंटरव्यू में आपने ईमेल कर दिया है रेज्यूमे, आपने कवर लेटर भी ईमेल कर दिया है, पर जब आप वॉकअप करते हैं एक इंटरव्यूअर के पास या एक इंटरव्यू पैनल के पास, और आपके पास अपना एक फोल्डर होता है
जिसमें चीजें बड़ी ऑर्गेनाइज्ड लगी हुई है ना, आपने उधर फ्लैग्स लगाए हुए हैं, आपने लेट्स से पेपर टैग्स लगाए हुए हैं, आपने उसको ईयर वाइज अरेंज किया हुआ है, आपके पूरे सर्टिफिकेट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, जो भी चीजें आप समझते हैं आपको लेके जाना चाहिए, वो एक प्रॉपर फाइल में मेंटेन होती है। वो देखते ही एक इम्प्रेशन आता है आपके इंटरव्यूअर के ऊपर कि ओ वाओ, ओके, तो दिस पर्सन इज रिलायबल एंड डिपेंडेबल इन द सेंस कि ये ऑर्गेनाइज्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। 2, आपकी पंक्चुअलिटी, आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल्स कैसी है। अगर पंक्चुअलिटी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट स्किल। सो फॉर एग्जाम्पल, आई स्टडीड एट द IBA कराची, और हमें ये पता होता था कि 9 o'clock हमारी पहली क्लास लगती है, और 9 o'clock डॉट पे हमारी टीचर, हमारा टीचर या हमारी टीचर, मेल फीमेल जो भी होते थे, वो अटेंडेंस लेना शुरू करते थे। हम IBA की शटल से कराची यूनिवर्सिटी के गेट पे उतरते थे। उस जमाने में वहाँ पे रेंजर्स लगे हुए थे, बड़े प्रॉब्लम्स थे पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह के। तो IBA की शटल से हम उतरते थे, रेंजर्स की चेकिंग से हम गुजर के अगले मेरे ख्याल से 2 मिनट की वॉक होती थी, और वहीं से हमें IBA की शटल IBA तक ले जाती थी। अगर हमें किसी दिन देर हो जाती थी ना, हम भाग रहे होते थे अपनी क्लास के अंदर, क्योंकि हमें पता होता था 9 o'clock अटेंडेंस कॉल हो गई। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मेरा नाम ए से था, तो पहली ही रजिस्टर कॉल में मेरा नाम आ जाता है। क्योंकि वालेकुम अस्सलाम जी, आप, I think we'll have to mute you because I'm talking right now if you don't have a question. So we knew we had to reach the class on time. There were no two ways about it. So uski wajah se, you built up a habit of punctuality. Apart from building up a habit of punctuality, you build up a habit of time management. आपको पता है कि आपके पास 45 minutes का एक assignment है, and you have to finish that assignment in 45 minutes. Think about it as your board exam. आपके पास एग्जाम देने के लिए 2 घंटे का या 3 घंटे का टाइम होता है, रियली डोंट नो कितना टाइम होता है, राइट? आपने उसमें अपने क्वेश्चन पेपर्स पढ़ने भी होते हैं। आपने देखना है कि अगर आपने 5 क्वेश्चंस के जवाब देने, आपने टाइम मैनेजमेंट उस हिसाब से करनी है। आपने वो टाइम भी रखना है जहां पे आपको प्रॉबेबली रिव्यू करना है अपने अपनी आंसर शीट को एक दफा। So this is how you plan on your time, or how do you execute your time, and how do you get to do things in a limited time. If you do not have that quality, you're in big trouble. So not your reliability will only come, and your dependability will only come if people around you जिन्होंने आपके साथ काम किया वो comfortable है इस चीज से कि yes, I can trust, let me just pick a name from here, Elizabeth, okay, and I can see Iram on my screen. So I will trust Elizabeth and I will trust Iram because I know मैंने इनको जब भी काम दिया है वो काम टाइम पे खत्म हुआ है, and I know मैंने जिस तरह के टास्क असाइन किए 99% उस टास्क के मेरे ऑब्जेक्टिव्स मीट हुए हैं. That is reliability and that is dependability. Obviously because अब आप जा रहे हैं तो इस वक्त आपको इस चीज का नहीं पता है कि आपका नया एम्प्लॉयर किस तरह इस चीज को देख रहा है, बट इंटरनली अपना सेल्फ असेसमेंट करके देख लें कि आप कितने रिलायबल हैं और कितने डिपेंडेबल हैं. 3, willingness to learn new skills. In this situation, बल्कि इस दौर में अगर आप देखें इतनी चीजें चेंज हो गई हैं फॉर द लास्ट 5 months, ना 4 months एक्चुअली. मार्च में लॉकडाउन कराची में शुरू हुआ ना, सो आई वुड से मार्च. इतनी इतनी एक रैपिड चेंज आया है क्योंकि एक पेंडेमिक है और उस पेंडेमिक का और उस वायरस के म्यूटेशंस इतने हो गए और आप रोज एक नई चीज सुन रहे होते हैं. तो सबसे पहली स्किल जो हमने सीखी is the survival skill in these times. और सर्वाइवल स्किल्स में मैं तो हॉस्पिटल में काम करती हूँ, इससे ज्यादा प्रॉबेबली फिनिकी हूँ. एंड मेरे घर पे आई हैव एन 82-year-old father and I have a husband who's 60 plus. तो दोनों अंडरलाइन हेल्थ कंडीशंस के साथ हैं. सो मेरे घर में तो मास्क और ग्लव्स लाइक मतलब देयर आर नो टू वेज अबाउट इट. तो ऑन द अदर हैंड मैं किसी से अगर बात कर रही होती हूँ, आई टेल दैट पर्सन कि ओ माय गॉड आई एम सो सॉरी, आई हर्ड तुम्हारी डेथ हो गई है, बट भाई तुम जनाजे में क्यों जा रही हो, जनाजे में सोशल डिस्टेंसिंग तो होगी नहीं. एंड वो कहते हैं अब क्या करें, उधर भी तो जाना जरूरी है, हालात ऐसे हैं और हाँ देखेंगे अब.
कंधे से कंधा मिला के सफ होती है, नमाज होती है. सो वेयर इज योर सोशल डिस्टेंसिंग, राइट? बट ऑब्वियसली एक रिलीजियस टॉपिक है तो उसके ऊपर मैं ज्यादा डिबेट करना नहीं चाहती थी, मेरे अपने पैराडाइम्स हैं. तो आप कितने अडेप्टेबल हैं एक नई चीज सीख के उसको इम्प्लीमेंट करने या उसको अडेप्ट करने के लिए, ठीक है? अगर आप रिजिड हैं और आप कोई नई चीजें नहीं सीखना चाहते, या अगर आपके अंदर अपने आप को असेस करके देखें प्लीज, अगर आपके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है नई चीज सीखने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में यू विल ऑलवेज फील लाइक अ मिसफिट. सो इन तीनों पॉइंट्स की आपसे बात करने का आइडिया ये है कि प्लीज मेक श्योर कि आप अपने आप को, जैसे मैं बात करती जा रही हूँ, प्लीज कीप थिंकिंग अबाउट इट. नोट्स लेने की जरूरत नहीं है. मैं ये पूरा जो प्रेजेंटेशन है शेयर कर दूंगी फाइजा के साथ, प्लस अगर ये लाइव है, रिकॉर्डेड है, यू कैन ऑलवेज एक्सेस इट लेटर. or anything else you want to ask me, please go ahead and do it right now or while we continue the session. अच्छा जी, वर्किंग वेल विद अदर पीपल, इंटरपर्सनल स्किल्स में क्या क्या चीजें आती हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स, बोथ वर्बल, नॉन वर्बल एंड लिसनिंग. वर्बल स्किल्स वो है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप पलट के जवाब दे रहे हैं, मैं इंगेज कर रही हूँ, ये हमारी वर्बल स्किल्स होती हैं. नॉन वर्बल में दो टाइप की स्किल्स होती हैं, हमारी रिटन स्किल्स होती हैं और हमारे बॉडी लैंग्वेज होता है, ठीक है? बहुत सारे लोगों की आप पोस्चर देख के या उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के आपको अंदाजा हो जाता है कि ओ माय गॉड, इसका मूड इस वक्त सही नहीं है, मे बी आई शुड टॉक टू दिस पर्सन राइट नाउ, या ओ माय गॉड व्हाई डज दिस पर्सन गिव मी, अगर मैं यूं बैठी हूँ सो आई विल गिव यू, मैं आपको एक इंप्रेशन दूंगी कि स्टे अवे, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, राइट? सो हाउ वी राइट, व्हाट वी राइट, किस तरह हम अपने नोट्स को, लेक्चर्स को, उन चीजों को जमा करते हैं, हम किस तरह लिखते हैं, वो नॉन वर्बल में आता है. हमारी बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल में आती है. और दिस इज अ होल बिग एरिया व्हिच आई कांट कवर इस सेशन के अंदर. बट नॉन वर्बल के अंदर बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, मैं जब हैंड शेक अगर किसी से करना चाहूँ, इन हालात में तो नहीं, बट इफ आई एम शेकिंग माई हैंड, कितनी वार्मथ है, कितना हाथ में मेरे, मतलब यू कैन फील इज इफ आई एम बीइंग फ्रेंडली और नॉट फ्रेंडली, और इस तरह की चीजें. एंड देन लिसनिंग, अनफॉर्चुनेटली मैंने ये बहुत फेस किया है. मैं टीचर रही हूँ 13 ईयर्स, मैंने MBA और MS लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है, रिसर्च और प्रोजेक्ट्स उनके हैंडल भी किए हैं. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग आई कीप टेलिंग माय स्टूडेंट्स कि एज अ नेशन, नॉट जस्ट यू गाइस एज स्टूडेंट्स, बट एज अ नेशन, ये हमारी वीकनेस है. हम जब हम हियर करते हैं, हम लिसन नहीं करते. फर्क होता है दोनों के अंदर, ठीक है? प्लीज याद रखें, हियरिंग इज मैंने एक चीज सुनी और वो रजिस्टर नहीं हुई मुझे. लिसनिंग इज मैंने एक चीज सुनी, मैंने उसको समझा और उसको समझने के बाद डिसाइड किया कि क्या ये मुझे अपने तक रखना है या एम आई सपोज टू रिस्पॉन्ड. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड बिटवीन लिसनिंग, ठीक है? तो अगर, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो हम करते हैं, हम किसी की बात इसलिए नहीं सुनते कि हम उस बात को एब्जॉर्ब करके अंडरस्टैंड करें. हम उस बात को सुनते ही, एक नेशनल प्रॉब्लम है ये हमारा, हम किसी की बात सुनते ही इसलिए कि ओ माय गॉड मुझे इमीडिएटली इस बात का जवाब देना है. नो, नॉट नेसेसरीली, राइट? बात सुने, listen to what the person has to say with an attitude of understanding and trying to assess कि क्या बात हो रही, rather than saying immediate reaction कि हमें respond करना है. So please be careful with that. Hearing और listening के फर्क को बहुत clearly अपने पास, वो कहते हैं ना, पल्लू में बांध लें उसको. इमोशनल इंटेलिजेंस, ये दुनिया में मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है. आई लव टॉकिंग अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस. आपने सुना होगा EQ, IQ, जो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं उनके इंटेलिजेंट क्वेश्चंस होते हैं, IQ इसका इतना हाई है, दिस पर्सन इज सो इंटेलिजेंट, इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? अराउंड 30 years बैक जो सोशल या बिहेवियरल साइंटिस्ट थे, they came up with a term saying कि it's not IQ जिससे जो है वो आपके टोटल प्रोफेशनलिज्म के ऊपर इम्पैक्ट आता है, but there's also another term known as EQ या EI, emotional intelligence या emotional quotient.
how do you manage your emotions and how do you manage the emotions of others to work well with them. ये इमोशनल इंटेलिजेंस या ये हम इसको EI कहते हैं या EQ कहते हैं, इमोशनल क्वोशंट्स. थर्ड चीज के ऊपर मैंने आपसे पिछली स्लाइड में अंदर आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस इज टीम वर्क. हाउ डू यू गेट अलोंग विद पीपल. यू मे नॉट लाइक समवन बट मजबूरी है, किसी के साथ काम करना है और there's always something called a working relationship. So offices में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं who we don't like, जिनके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, जिनके साथ हमारा पेशेंस थ्रेशोल्ड थोड़ा सा कम होता है and we get very judgmental. But the idea is that we need to well take everyone and move along, क्योंकि हमें कुछ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स मीट करने होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स मीट करने के लिए वी नीड टू वर्क इन टीम्स. देन वन मोर स्किल, इंटरपर्सनल स्किल जो कि इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है नेगोशिएशन, पर्सुएशन और इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स की. अच्छा, ये तीनों वर्ड्स आपको बहुत एक नेगेटिव कॉनोटेशन देते हैं, बट we're not looking at them from a connotative point of view. We're looking at them directly from the context point of view. How well are you with negotiation? So वो लोग जिनकी negotiation skills अच्छी होती हैं, जिनकी persuasion skills अच्छी होती हैं, जिनकी influencing skills अच्छी होती हैं, उनको usually even within your sector, business development और sales की jobs के अंदर उनके पास ज़्यादा opportunities और ज़्यादा chances होते हैं to work. अच्छा, by the way, negotiation, persuasion और influencing skills जो होती हैं, they do not come just with talking. Please ये याद रखें. You persuade and you influence people with data, with facts, with proper paperwork, with logic and with analysis. Influencing और persuasion सिर्फ बातें करने से नहीं होता है, तो प्लीज इसको मिक्स ना करिएगा कि जी इन्फ्लुएंस वो लोग कर सकते हैं जो बातें बहुत अच्छी करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन में एक लेवल पे आके जो बहुत अच्छी बातें करने वाले होते हैं, वो I wouldn't like to say they lose out on things, but I would definitely say that they would not progress to a level in their growth or in their career where they should have, because उन्हें सिर्फ बातें करनी आती थी, बातों को फैक्ट्स के साथ, बातों को लॉजिक के साथ सपोर्ट करनी नहीं आती थी. So one of the very important interpersonal skill is being able to negotiate, persuade, and use influence. Conflict resolution and mediation skills. We've got a lot of people who are very good at, corporate words में तो उसको arbitration कहते हैं, because it's a very legal term also. But when you're working at a junior level, entry level के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम फॉर्मिंग या टीम ब्रेकिंग या टीम रीफॉर्मिंग की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स भी आती हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स that probably the other person doesn't understand the way you want them to understand, because remember I talked about hearing versus listening. So at times इस तरह की situation आ जाती है where you land up in a conflict, और उस conflict की वजह से आपके बॉस को इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपके पर्सनल झगड़े. प्लीज मार्क माय वर्ड हियर, बट दीज कॉन्फ्लिक्ट्स आर कॉन्फ्लिक्ट्स जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन गोल्स आपके सफर कर रहे होते हैं. सो इफ यू आर अनेबल टू मीट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव just because you don't get along with someone, that's a killer. So you need to be developing. If you don't have it, there are people in organizations who have those. हर ऑर्गेनाइजेशन, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन अपने एंट्री लेवल के पीपल के साथ कोचेस या मेंटोर्स लगा देते हैं. तो those coaches are there to take you through the first 6 months or a year of your organization, because आप उस कल्चर में एंट्रेंच होते हैं. कभी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में काम या कभी काम नहीं किया. I'm assuming a lot of you have not started working as yet. So conflict resolution and mediation skills वहाँ आपके काम आती हैं. Probably the most important skills after EI is problem solving and decision making. So when your organization takes you up and assigns you a task, they automatically assume you are good enough to look at a problem through various techniques that you've probably learned in school या college. Algorithm लगाएं, formula लगाएं, रातें काली करें, they don't care. So do you have those skills to solve problems
and based on that problem solving skill, उसमें आपको चाहे help लेनी पड़े peers की, teams में काम करना पड़े, get the problem out of the way, and based on उस problem को आपने किस तरह analyze किया या उस किस तरह से आपने equation analysis करके उसके results आपने reach किए, the organization expects you to make a decision. Organization will not make a decision. यहाँ पे एक word of caution बहुत important होता है. At times the organization or your management asks you to look at a problem and suggest a solution or a recommendation. They will not ask you to make a decision. So please be careful whether you've been asked to make a decision या आपसे सिर्फ कहा गया है इस चीज की recommendation दो. Decision making usually in smaller state-run organizations, the decision making lies with the top management. Entrepreneurs के साथ भी जो आपके small and medium या home based entrepreneurs होते हैं, उनके साथ भी the decision maker lies with the person who's invested the money. It cannot be with you. So problem solve करें, decide करें कि आपको decision देना है या आपको recommendation देना है, and move accordingly. Faiza, I don't have a question so far, right? I don't think so. Oh, okay. Yeah. I'm coming to that. Okay, so I see a question. How to introduce? I'm going to come to interview skills, और उसमें हम इस चीज को लेते हैं. Let me look at Faiza. Let me look at your thread of questions. Okay. All right. I'm going to take up all these questions. These are interesting questions. Let's go through the interview wala phase and then we'll check. Okay. Acha, I've already talked about being reliable and dependable, being organized and managing time effectively. I've given you examples. Being trustworthy and being conscientious. Your employers need to understand that you are trustworthy and you are conscientious. Like for example, इसका example आप इस तरह से ले लें. Obviously, if you've not started working, but आप किसी student union का part थे, या आप within your college या within your community आप किसी society का या community का part थे, जिसके अंदर आपको probably आपकी जो community थी उसने आपको trust किया था with some specific legal documents, या आप finance देख रहे थे उधर का, या you were looking at audits there. So you can always talk about that and you can always recall that incidences, और फिर जब आप अपना resume बनाए तो उसके अंदर इस तरह की आप चीजों को डाल सकते हैं जिससे show होता है you are responsible and you are conscientious. Like for example, अगर आप बात करेंगे कि जी you had a CTA, a call to action आपने किया for animal rights, for example, right? That tells you कि एक humanitarian angle है जो कि EI का एक बहुत important part है, and then you are being conscientious. Taking responsibility for your action, I talked about that कि once you take a decision yourself और आपने वो decision, you've done a lot of homework, आपने सारी complexities को analyze किया, you've used logic, you've used some funny algorithm जो आपने खुद अपना develop किया. I don't know about that, right? When you take your own decision, you are responsible for your action. That is the reason it's always encouraged for people to take their own decisions and take their own actions. We talked about a willingness to learn. Obviously, personal development. Look at your habits, look at your attitudes, look at your style. Think about it as a corporate fit. कौन सी चीज़ है जो corporate fit आपको नहीं देता और कौन सी चीज़ है जो corporate fit देता है? That is all about personal development. Time management नहीं है, punctuality नहीं है. Please go ahead, work around skills. और by the way, ये जितनी चीजें slides में हैं, we're not born with them. 90% of the time we learn them. You learn them through experience, you learn them through coaches, you learn them from college, you learn them with teachers, you learn them from friends. So whether it is personal development or if you want to embrace a personal change, right? बहुत छोटा सा personal change का मैं आपको example देती हूँ. सुबह उठ के college जाना. People are not very fond of getting up in the morning because जो Gen Z और millennials आपके हैं, those people usually work very late in the night. अब work में जो उनके personal contacts हो सकते हैं, उनके अपने कुछ projects होते हैं जिसके ऊपर वो काम करते हैं,
or maybe they're working in a group and there's a time zone difference. They're working with someone who's not in Pakistan, UK, US में, जहाँ पे आपके zone different है. तो obviously और फिर सुबह उठ के physically college attend करना या online login करना 9 o'clock की class attend करना, it becomes difficult. So that is what I mean by embracing personal change. You should be able to figure out what is important for you in terms of your own career growth, your own progression in life, and then based on that, please go ahead and embrace that personal change. Acha, I have 4 questions here from Faiza, and most of them relate to either a CV or to an interview, and I will tackle those when I come and talk to you about these things. Okay. What is a CV or a resume? Should we have a CV or should we have a resume? So a CV is a very interesting term. It's curriculum vitae. It's a Latin term which means course of life. So अगर कहीं curriculum vitae लिखा होता है तो curriculum vitae is a very European, it's a very British terminology. Americans या Australian terminology, Americans always like to use the word resume. For the sake of this slide and this presentation of what I'm talking to you, हम CV और resume को interchangeable use करेंगे. But if someone asks me to submit a CV, I know I can put in 5 to 6 pages. It is a detail on what I have done. Versus a resume को कोशिश करें 2 pages से ऊपर ना जाए. That is what you have to make sure in a resume. आपको अगर मैं अपना if I had to show you my own as a sample, my CV is almost like 5 pages. उसमें मेरी एक publication है, description है कि मैंने कहाँ पे क्या काम किया है, मेरी community work है, मेरी सारे के सारे volunteer work है, मैंने जो edits किए हैं या मैं editor रही हूँ या मैं बहुत सारे और मैंने काम किए, उन सब की details हैं. And in my resume, I usually have a profile. I have a 1.5 pages के profile जिसमें मोटी-मोटी चीजें हैं जो मैं समझती हूँ important है जो मुझे डालनी चाहिए. Okay, let's start about how we develop a resume. जब भी आप resume लिखें, अच्छा अब तो जिंदगी आसान हो गई है, बहुत सारी templates आपकी MS Word पे भी available है, plus आप online जाके भी बहुत सारे देख सकते हैं. But हमारे employers, पाकिस्तानी employers, उनको आदत है कुछ एक typical एक format में resume देखने की. और तो मैं आपको let me just take you through that format जिसमें वो देखते हैं. आपको सबसे पहली चीज जो टॉप पे रखनी होती है वो होती है आपकी डिटेल्स, राइट? पुट योर नेम अप देयर. आई विश मैंने भी सैंपल कर देती, अपना रेज्यूमे आपको दिखा देती. आपका नाम, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसके अंदर होने चाहिए. सेकंड, उससे नीचे आइए. अब आप सोचें आपने क्या करना है. क्या आप पर्सनल स्टेटमेंट से स्टार्ट करना चाहते हैं अपना रेज्यूमे या अपना करिकुलम वाइटिंग? फॉर एग्जाम्पल, यू कैन ऑलवेज से I am an energetic, dynamic person who wants to apply all the skills that I have learned in the field of Java, Python या HTML, जो भी आपने languages करी, ठीक है? And I want to put those skills to an organization where these skills can be used for further growth and further enhancement. So it is your choice to start off directly with your education, with your skills, knowledge, education, experience, or you put in a personal statement. Most of the good organizations, they would like to see a small personal statement, क्योंकि वो statement लिखने के लिए वो expect करते हैं आपने बहुत जान मारी होगी, आपने मेहनत की होगी. Organizations expect करती है कि वो copy paste statements नहीं होंगे. याद रखें, copy paste statements बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं, स्पेशली अगर आपने अपना रेज्यूमे ईमेल किया, जो कि अब नॉर्म हो गया है. और bosses are usually, or the employees are HR department is usually asking you to send it online. और online के अंदर जब वो देखते हैं इस तरह की बहुत सारी इस तरह के जुमले लिखे हुए होते हैं जो कि उन्होंने बहुत दफा पढ़ चुके हैं और यंगस्टर्स के रेज्यूमे इसमें भी, तो they know it's a copy paste, it's not original. तो प्लीज अगर आपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखना है, it's got to be original, it's got to talk about who you are and how your skill can impact whatever is happening in that organization. छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाने अपने रेज्यूमे में.
अपनी स्किल्स का पैराग्राफ बना लें, नॉलेज एंड अचीवमेंट का पैराग्राफ बना लें, वर्क एक्सपीरियंस का पैराग्राफ बना लें, एजुकेशन का पैराग्राफ बना लें. एंड हियर इज वेयर आई विल टेक द क्वेश्चन जो कि फाइजा ने पोस्ट किया है. ओके, लेट मी लुक एट अ क्वेश्चन हियर. अच्छा नहीं, अभी तक सारे इंटरव्यूज के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड so these are things I will take up in the interview. I will not take it. Our fifth question आया, how to deal with a hostile interviewer who says things like you are stupid, whatever. I'll talk about those things also. Okay, so key skills अपनी डालें, ठीक है. अच्छा, कुछ skills हमारी होती है, like I said, soft skills. कुछ होती है हमारी hard skills, right? So if your soft skill is you are ambitious and you are an achiever, that's a soft skill, put it there. बट याद रखें, अगर आप कहते हैं अपने आप को अचीवर कहते हैं, एम्बिशियस कहते हैं, आपको स्किल को एक्सप्लेन करना होगा इन अ लाइन. एंड इफ यू टॉक अबाउट योर हार्ड स्किल्स, इफ यू से आई एम एन एक्सपर्ट एट जावा, आई एम एन एक्सपर्ट एट एक्सेल, आई एम एन एक्सपर्ट एट एक्सेस, you will have to give a one liner example of why do you consider yourself to be an expert. You know, maybe आपने कोई certification किया है जिसके ऊपर you made an A star, या आपने कोई ऑथेंटिक CCNA वगैरह कोई चीज की हुई है, which is also, you know, it's like considered a key skill. So put it there. Personally, I feel key skill में you should put up the employability skills that I talked about. ठीक है, dependability हो गई, reliability हो गई, effective time management हो गया, organized हो गया. Put those skills there. अच्छा जी, knowledge and achievement. How much do you know and what have you achieved out of it? अगर आपकी कोई बेसिक नॉलेज कराटे की है और आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं, या आप वहाँ काम कर रहे हैं जहाँ पे कंटेंट राइटिंग की आपको जरूरत है, सो मे बी कराटे, well, I wouldn't say it would come in too handy there to put up as a skill there. But let's say आप कराटे में you've reached a level जहाँ पे you know you've reached a level 6, वो पता नहीं कराटे में कोई बेल्ट बेल्ट टाइप का कोई चक्कर होता है. If you've done that, mention this, और उसके साथ ये जरूर mention करें कि you want to mention this here because आपका एक focus है, आपका dedication है, even if it was to learn karate, and because of that dedication and focus you've reached level 6. उसको इस language में convert करके आप डालें whenever you want to put it in your knowledge and achievement. Then comes your work experience. For example, अब आपने काम किया है, let's say you were working during summer, you were doing some job with a family or with a community जो कि gardening या landscaping करती है, okay? अब आप सोचें वो work experience आपको डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए resume में, right? If I were in your place, I would put it. Why? दो चीजों की वजह से. It shows कि आप फारिग नहीं बैठते हैं, आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं. Two, maybe जब आप गार्डनिंग और लैंडस्केपिंग कर रहे थे तो आपके अंदर एक एस्थेटिक सेंस हो गया. You learned about, you know, you say, well, I put a lot of biology knowledge जो मैंने grade 9 में या grade 10 में सीखी थी, I was able to apply there. Or you say, I learned a lot about geography and I learned a lot about earth. So it depends कि rather than if I were your employer और मैं आपको रेज्यूमे देखूं और मैं देखूं उसमें मुझे 6 महीने का गैप नजर आ गया और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं इन एन इंटरव्यू, तो आप बोले ओ वेल बिकॉज मैं एक लैंडस्केपिंग फर्म के साथ काम कर रही थी तो आई डिडंट थिंक इट वाज इम्पोर्टेंट. ठीक है, गैप दिखाने से बेहतर है अगर ऑनेस्टी में आपने कोई काम किया, भले वो बिल्कुल छोटा काम हो, भले वो नॉन पेड हो, आपने उसके लिए हो सकता है यू वर नॉट पेड फॉर इट, कोई स्टाइपेंड ना हो, बट थिंक अबाउट दैट वर्क जो आपने किया. आपने ऐसी क्या चीज उस काम में सीखी है जो आपके रेज्यूमे में वैल्यू ऐड कर सके, प्लीज यूज इट. देन कम्स योर एजुकेशन. अच्छा, अब आप नोटिस करें यूजुअली हमारे यहाँ बहुत क्रेज है लोगों को रेज्यूमे बनाते में एजुकेशन सब पे टॉप पे डालते हैं. ठीक है, इट्स बोरिंग. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस डोंट वांट टू नो दैट until and unless आप हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड से नहीं पढ़ के आए हैं. ठीक है, एंड वी नो अ लॉट ऑफ अस कैनॉट अफोर्ड इट, कैनॉट क्वालिफाई, कैनॉट गो. ठीक है, सो प्लीज एजुकेशन को जब आप अपना रेज्यूमे बनाएं इसी ऑर्डर में बनाएं जिस ऑर्डर में मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ.
एम्प्लॉयर्स इस तरह के रेज्यूमेस देखना पसंद करते हैं, ठीक है। रेज्यूमे में जब आप बात कर रहे हैं तो कुछ चीजें हैं जिनको आप फोकस करें, भले उनकी अलग अलग लाइंस बना लें, भले अलग अलग पैराग्राफ्स बना लें, इन चीजों में मर्ज कर लें। फॉर एग्जाम्पल, फोकस ऑन व्हाट यू हैव डन एंड द रिजल्ट्स अचीव्ड, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई कैन ऑलवेज से इन माय रेज्यूमे, आई कैन से, आपको पता है आजकल एम्प्लॉयर्स जो हैं कम्युनिटी और वॉलंटियर वर्क को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। आई कैन ऑलवेज से I worked with children with special needs, and throughout summer, I gathered a group of 10 children with special needs and I taught them music. Or you can always say, I worked with these children of my domestic servants, जो मेरे घर पे काम करने, मेरा कुक आता है या मेरी मेड आती है, मैंने उनके बच्चों को पढ़ाया. That's my way of giving back to the society. Okay, so these are the type of things. Say that after 2 months, these children were able to read and write complete alphabets and digits from 1 to 100. ठीक है, so क्या किया है और उसकी वजह से अचीव क्या किया है. Okay, और you say कि well, I got together with friends और हमने एक charity concert arrange किया और उस चैरिटी कॉन्सर्ट से वी वर एबल टू रेज 3 लाख रुपए, और वो 3 लाख रुपए हमने डोनेट कर दिए टुवर्ड्स चिल्ड्रंस कैंसर फाउंडेशन, या हमने जो है ईदी होम, या हमने जो है लेप्रेसी सेंटर में डाल दी. सो टॉक अबाउट व्हाट यू डिड एंड टॉक अबाउट द रिजल्ट, आपको क्या मिला है. प्लीज ऑल्सो रिमेंबर, एम्प्लॉयर्स रिमेंबर नंबर्स. सो इफ यू कैन कोट 2.5 लाख रुपए चैरिटी से जमा किए, 10 बच्चों को 1 to 100 तक डिजिट सिखा दिए, राइट. दीज आर थिंग्स जो एम्प्लॉयर्स को याद रहेगा रेज्यूमे में. तो टॉक अबाउट व्हाट यू हैव डन एंड व्हाट इज द रिजल्ट यू हैव अचीव्ड. इंक्लूड एवरीथिंग रेलेवेंट इन वर्क एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन. आई जस्ट टॉक्ड अबाउट इट. जो चीज भी हो, गैप नजर आने से बेहतर है उसको अपने वर्क एक्सपीरियंस में डालें और उसको अपनी एजुकेशन की फील्ड में डालें. Oh, and this is something which is like a killer. अगर मैं कोई स्पेलिंग या ग्रामेटिकल एरर देख लूँ ना रेज्यूमे में, मैं बिल्कुल ऑफ हो जाती हूँ. आई एम सॉरी, मैं आई माइट साउंड जजमेंटल, बट मैं क्यों ऑफ होती हूँ? नॉट बिकॉज कि मैं कम्युनिकेशन की टीचर रह चुकी हूँ, मैं इसलिए ऑफ होती हूँ कि मुझे फॉरन डिपेंडेबिलिटी फैक्टर आता है कि यार ये बच्चा या ये बच्ची अपना रेज्यूमे अपनी चीज सही नहीं लिख सकी कि मेरी रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन के साथ क्या करेगी. ठीक है, क्या मैं कहती हूँ यार ये बच्ची तो सीरियस ही नहीं है, उसने अपने रेज्यूमे को मतलब देखा ही नहीं कि उसमें इतनी गलतियां आ रही है ग्रामर की या अंग्रेजी की. अब तो आपको पता है आपके एमएस ऑफिस में सारी यूटिलिटीज आ गई हैं. हमारे जमाने में ग्रामर नहीं होता था, ग्रामर चेक नहीं होता था, स्पेल चेक होता था सिर्फ, राइट. सो हम बार बार पढ़ रहे होते थे चीजों को, राइट. सो इट्स सो इम्पोर्टेंट. रेज्यूमे आपका स्पेलिंग और ग्रामर एरर फ्री होना चाहिए. टेक हेल्प, ओके. अपने फ्रेंड से हेल्प मांगे, छोटे छोटे जुमले बनाएं. डू नॉट इंडल्ज इन लॉन्ग अंग्रेजी की डिफरेंट रेन एंड मार्टिन वाली ग्रामर की अंग्रेजी. आजकल की मॉडर्न राइटिंग इज ऑल अबाउट कॉन्वर्सेशनल स्टाइल ऑफ राइटिंग. डू नॉट डू दैट. वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन. या अल्लाह, कुछ रेज्यूमेस में देखती हूँ हर हेडिंग एक डिफरेंट फॉन्ट में होती है, अंडरलाइन होंगी, कैपिटल्स होंगे, बोल्ड्स होंगे, इटैलिक्स होंगे. नेवर यूज बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइंस टुगेदर. डिसाइड कर लें क्या यूज करना है, डिसाइड कर लें क्या यूज नहीं करना. ठीक है, फॉन्ट्स के ऊपर बहुत तवज्जो दें प्लीज. टाइम न्यूज रोमन्स 11 से कम नहीं होना चाहिए, एरियल 11 से कम नहीं होना चाहिए. These two Calvary भी आप यूज कर सकते हैं unless you're not too scared about the Mariam Nawaz Sharif scandal. Go ahead and use Calvary. But याद रखें ये तमीज के फॉन्ट्स होते हैं. कॉमिक sans कभी जिंदगी में नहीं यूज करना है आपने फॉर अ रेज्यूमे. Forget it. You give a very irresponsible जिस देखे ना बंदे ने आपको देखा नहीं है या उस बंदी ने आपको देखा नहीं है जो आपको इंटरव्यू करने वाले, उनके हाथ में आपका पूरा फ्यूचर, आपकी पूरी क्रेडिबिलिटी उस एक पेपर पे है जिसको हम आपका रेज्यूमे कहते हैं.
प्लीज मेक श्योर रेज्यूमे में जो प्रेजेंटेशन हो आपको पता हो फॉन्ट क्या है, आपको पता हो इंडेंट आपने कहाँ यूज करना है, आपको पता है स्पेसिंग कैसी होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता दो लाइंस के बीच में 10 स्पेस हो और उसके 2 लाइंस के बीच में जो है 14 की स्पेस हो। मैं बार बार आपको बताऊंगी इन चीजों के बारे में। सेकेंडली, अगर आप रेज्यूमे अपना ईमेल कर रहे हैं तो याद रखें हर एक के कंप्यूटर की कंपैटिबिलिटी डिफरेंट होती है। सो अपने रेज्यूमे को वर्ड में बनाइए, थरली चेक करें, अंग्रेजी वंग्रेजी प्रेजेंटेशन उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजिएगा आपने जहाँ पे भी भेजना है। बिकॉज अगर किसी और के डेस्कटॉप की कंपैटिबिलिटी डिफरेंट है तो वो टॉगल हो जाएंगे, ऊपर नीचे चले जाएंगे, पूरा रिफ्लेक्शन देगा। तो मेक श्योर आप उसको अपने रेज्यूमे को वर्ड में बनाने के बाद पीडीएफ में कन्वर्ट करके फिर उसको भेजिएगा। सॉरी आई एम स्टक, कोई बहुत ही लूजर टाइप की चीज आ गई। ओके, डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लाई। ओके, लोग समझते हैं एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू आंसर। जो फाइजा ने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था अबाउट अबाउट हॉबीज एंड इंटरेस्ट रेज्यूमे में डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। ओके, डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लाई। हमारे जमाने में जब लोग रेज्यूमे बनाते थे, रेज्यूमे बनाए हुए बहुत जमाने हो गए, ग्रेजुएट किए हुए 26 साल हो गए, एमबीए किए हुए, तो बड़ा मजा आता था उस जमाने में, बड़ा क्रेज था हर एक को। 2 चीजें रेज्यूमे में जरूर डालते थे, रीडिंग, फोटोग्राफी। ओके, प्लीज याद रखें अगर आप कहते हैं रीडिंग, अव्वल तो ये कि जरूरत ही नहीं है, हॉबीज और एक्स्ट्रा करिकुलर में रीडिंग नहीं आती है प्लीज, ठीक है। रीडिंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, राइट। सो अगर आप रीडिंग डालते हैं और याद रखें अगले एंड पे बंदा जो है मेरे जैसा बैठा हुआ, हु इज अ रीडर हु लाइक्स टू रीड एंड राइट इट, मैं आपसे फौरन पूछूंगी क्या पढ़ते हैं, ठीक है। पोइट्री पढ़ते हैं, फिक्शन पढ़ते हैं, साइंस पसंद है, ड्रामा पसंद है, रोमांस पसंद है, नॉवेल्स पढ़े, ठीक है। अब आप फंस गए क्योंकि आपको तो इन सारे जॉनर के बारे में पता ही नहीं है। आपने तो कहा रीडिंग लिख दो यार, 3 किताबें 3 नॉवलें पढ़नी थी तो हम रीडर हो गए। Until this you are an avid reader, you do not have to bring it up. Also, क्या उस रीडिंग की वजह से कोई अचीवमेंट है आपकी? रिमेंबर पुरानी स्लाइड पे मैंने ये बात की, डोंट पुट इट अप। फोटोग्राफी, ओह माय गॉड, ठीक है, मैं तो आई सक एट टेकिंग पिक्चर्स इवन ऑन द आईफोन, राइट। ये बड़े लोग शौक से कहते थे फोटोग्राफी, गार्डनिंग, रीडिंग, प्लीज डोंट डू इट। नहीं है कोई ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से कोई और आपका अचीवमेंट हुआ है, मत मेंशन करें, झूठ ना बोलें प्लीज। ये याद रखें, आपकी सिंसियरिटी आपके फेस पे नजर आती है, आपकी बातों से नजर आती है। ओके, आपकी कॉज की सिंसियरिटी, अगर आप अपने आप से सिंसियर नहीं है, वो जो बंदा सामने बैठ के आपको इंटरव्यू कर रहा है ना, उसको 1 मिनट लगता है आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको देख के जज करने में कि ये पर्सन खुद अपने आप से कितना सिंसियर है। सो प्लीज डू नॉट लाई। ओके, avoid leaving gaps in your career history. I've already talked about it. Do not start your CV with dull bits. For example, उसी ऑर्डर में सीवी बनाइए जो मैंने आपको बनाया है, एजुकेशन को टॉप पे ना डालें, unless you went to Caltech or you went to Stanford, you went to Harvard. Do not include your hobbies and interests until and unless वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जहां पे उस तरह की हॉबीज या इंटरेस्ट में आपका कोई इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से आप किसी एनजीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं जॉब करने के लिए, and that NGO is very interested in the cause of animals, right? And if you ask me, that is what I want to do in life. I want to go and volunteer with, maybe the Aisha Chandrina Foundation. I love animals, right? So until and unless आपकी कोई ऐसी हॉबी या इंटरेस्ट नहीं हो जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करती हो जिसमें आप काम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, डू नॉट पुट इन हॉबीज एंड इंटरेस्ट। हॉबीज एंड इंटरेस्ट आपकी प्रोफाइल में आना चाहिए, ठीक है, जो कि which I haven't talked about here, which is so important, is your LinkedIn profile, ठीक है, but that's another chapter altogether. Don't make your CV too long. आप लोग यंगस्टर्स हैं, मेरी रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, इतने सारे मेरे काम हैं जिसकी वजह से, प्लस अब मैं लाइफ के स्टेज में वेयर आई कैन हैव अ लॉन्ग रेज्यूमे। यू शुड नॉट, 2 पेज से ज्यादा रेज्यूमे या आपका वो नहीं होना चाहिए। मेक श्योर यू डोंट डू इट, ठीक है। एंड समथिंग जिस पे मैं मतलब प्लीज थिंक अबाउट इट, बचपन में आप लोगों ने कैसे अपनी ईमेल आईडीज रखे हुए?
मैं स्टूडेंट्स को इंटरव्यू कर रही होती थी एमबीए एडमिशंस या बीबीए एडमिशंस के लिए, और ऐसे मजे मजे के ईमेल आईडीज पढ़ती थी मैं, buttercup@hotmail.com, और एक होता था जिप्सी क्वीन, आई वुड फ्लिप। मैं कहती थी यार ये 17-18 साल के बच्चे, इनको ये पता होना चाहिए कि ये ईमेल आईडी प्रोफेशनल नहीं लगती है, कैन नॉट यूज इट। द मोस्ट प्रोफेशनल ईमेल आईडी दैट यू कैन यूज इज योर ओन नेम, ओके, दैट इज द मोस्ट प्रोफेशनल। प्लस फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट पे हैं, आपकी अपनी डोमेन है, सो नथिंग मोर देन यूजिंग azramaqsood.com, उससे तो प्रोफेशनल कोई चीज है ही नहीं। बट अगर आपके पास अपनी डोमेन नहीं है, so please use your own name. Do not use buttercups and do not use gypsy queens. Highly unacceptable. मैं तो बिल्कुल put off हो जाऊँ ऐसी चीज देखने के लिए, right? It tells me you're not mature enough to come and work in my company. So that is the reason I insist that the killer thing that you can do is आपकी email ID बिल्कुल ही बचपने वाली, बचकाना और immature आपकी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन देती है। Make sure that doesn't happen. Okay. हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमें रेज्यूमे के ऊपर एक कवर लेटर लगाना होता है। अगर आपका कवर लेटर पैथेटिक है, गए आप काम से। अगर आपका कवर लेटर होल्ड नहीं करता है इंटरेस्ट एक एम्प्लॉयर का, योर रेज्यूमे इज गोइंग इन द ट्रैश कैन। लिखवा लेंगे चीज आप से, ठीक है। उन्हीं सब चीजों का आपको ख्याल रखना होता है जिनका रेज्यूमे के अंदर मैंने जिक्र किया। फॉन्ट साइज। सेकेंडली, जब आप कवर लेटर लिख रहे हैं तो कवर लेटर पे राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपका उस पर्सन को जिसके लिए आप लिख रहे हैं उसका नाम, डेजिग्नेशन और कंपनी का नाम आना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। लेट अस से आपने अप्लाई किया है, बट एप्लीकेशन जो आपने भेजनी है वो भेजनी है hr@abc.com को। दैट मीन्स पर्सन का नाम नहीं है, ठीक है। सो उसके अंदर व्हाट आई डू इज, इफ आई वर टू अप्लाई, मैं उसको करूंगी टू HR टीम ABC कंसल्टिंग कंपनी कराची, फुल स्टॉप। दैट इज हाउ आई वुड राइट। प्लस देखें, मैं जिसको लिख रही हूँ, अब मुझे नहीं पता वेदर इट्स अ मैन और अ वुमन, सो द बेस्ट थिंग टू डू इट से डियर सर स्लैश मैडम मैम। दैट इज हाउ यू पुट इन योर कवर लेटर। अगर आपके पास पर्सन का नाम है, ब्रिलियंट। इफ यू वांट टू राइट टू मी and my name is Azra Maqsood, there are two ways to write it. You say dear Miss Maqsood, okay, my last name. अगर आप मिस लिखेंगे तो my last name, otherwise आप पूरा लिखेंगे dear Miss Azra Maqsood. You will never write dear Miss Azra. Never write the first name. It's always two complete या three complete names या the last name with a title, Mr, Miss, Mrs, डॉक्टर, प्रोफेसर, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, स्पेशली जब HR के पास रेज्यूमे जाते हैं ना, तो HR इन चीजों को, रिमेंबर आई सेड इमोशनल इंटेलिजेंस एंड आई सेड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, writing a good cover letter and a CV, writing it itself is a good employability skill, talks about your professionalism and your maturity of writing, ठीक है। सेकेंडली एक चीज याद रखें, अक्सर मैं लोगों को देख रही होती हूँ, बेचारे, आई वर्क इन द पब्लिक सेक्टर, और लोग ना जो वो छोटे छोटे देहातों से या सबर्बन एरिया से आते हैं, उनके पास एक टाइप रिटन फॉर्मेट होता है जिसमें ब्लैंक्स डले हुए होते हैं। वो बेचारे अपना डेट डालते हैं, अपना नाम डालते हैं, और जिस जगह भी अप्लाई करते हैं वो कवर लेटर उसको समझ के भेज देते हैं, ठीक है। डोंट डू दैट। कवर लेटर हमेशा जिस सेक्टर में आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेट करता है, एम्प्लॉयर से रिलेट करता है, जॉब से रिलेट करता है, याद रखें। तो हर नई CV, रेज्यूमे एक ही हो सकता है आपका, दैट इज परफेक्टली ओके। आई हैव ओनली वन CV, आई हैव ओनली वन रेज्यूमे, आई कीप अपडेटिंग इट every 6 months, every 8 months, क्योंकि कोई ना कोई नई चीज उसमें आ जाती है। बट कवर लेटर हमेशा आपका नया बनता है। अगर आप कवर लेटर कंटेंट राइटर की जॉब के लिए भेज रहे हैं तो ग्राफिक डिजाइन या नो, आई वुडंट से ग्राफिक, क्योंकि वो कंटेंट में वो पास आ जाएगा, बट फॉर एन SEO स्पेशलिस्ट के लिए
वो कवर लेटर नहीं हो सकता, इट्स गॉट टू बी डिफरेंट। तो आपका मेहनत जहां आपकी लगती है, और जिस चीज के ऊपर मैंने देखा है लोग अक्सर बैक ऑफ कर जाते हैं, दैट शुड बी योर कवर लेटर। उस पे आप मेहनत करें। रेज्यूमे के ऊपर एक दफा मेहनत करके अच्छा बना के रख लें, कवर लेटर के ऊपर हर दफा नए सिरे से आपको मेहनत करनी है। कवर लेटर में क्या क्या चीजें होती है? इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, क्लियर करके जो भी आपने, यस सर, मैडम, व्हाटएवर, ठीक है। आई केम अक्रॉस दिस इंटरेस्टिंग पोजीशन that I noticed was advertised in the newspaper, या I saw it on LinkedIn या Facebook या wherever, not usually Facebook, usually LinkedIn. I came across this, या unsolicited भी होता है, कुछ जॉब है नहीं बट आप ऐसे ट्राई करना चाह रहे हो कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप भेजना चाह रहे हैं, ठीक ठीक है, ठीक है। सो यू विल, दैट विल बी योर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। पैराग्राफ 2 के अंदर इज द मेन सेक्शन। हियर आप क्या करेंगे, जो कुछ आपके रेज्यूमे में आपका स्किल सेट है, जो कि आप समझते हैं इस जॉब के लिए रेलेवेंट है, जिसके लिए आप कवर लेटर बना रहे, टॉक अबाउट दैट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड से I have heard so much about this brilliant company and the type of work that you do. And whatever I have learned in the last 6 years and my experience, I feel I can put that to absolute good use in working in projects जो कि आपकी हैं। आपका ये वाला प्रोजेक्ट मैंने देखा, ये बदीन में है, ये वाला प्रोजेक्ट मैंने देखा है पेशावर। इन दोनों प्रोजेक्ट्स को नेटवर्क और ब्रिज करने के लिए आई फील आई कैन ऐड एडेड वैल्यू, बिकॉज मैंने पिछले साल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है जहां पे 3 डिफरेंट स्टेशन के ऊपर मैं पोस्टेड रहा हूं या रही हूं। ओके, दैट शुड बी योर मेन सेक्शन। एंड देन द क्लोजिंग पैराग्राफ, बी वेरी वेरी पोलाइट, ठीक है, एंड से, you know, I am so excited to be putting in my application in your organization. Please call me on the phone or call me at falana ID. याद रखें, आपका रेज्यूमे नीचे आ रहा है, कवर लेटर ऊपर आ रहा है, तो रेज्यूमे में ऑलरेडी आपका ईमेल आईडी और फोन नंबर है, बट एक चीज होती है CTA, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन हम किस तरह करते हैं? अगर उधर ही एक लाइन में आप लिख दें, फील फ्री टू कॉल मी अप, नंबर दे दें अपना, और ईमेल मी हियर, ठीक है, एंड आई लव टू कैच अप विद यू और डिस्कस विद यू द ऑप्शंस ऑफ वर्किंग विद योर ऑर्गेनाइजेशन एट अ म्यूचुअली कन्वीनियंट टाइम, ठीक है। सो उसी पेज पे अगर आप अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी दे देते हैं, क्योंकि आपके रेज्यूमे में भी ऑलरेडी जा रहा है, तो वो उसको रेज्यूमे देखने की जरूरत नहीं। इफ द पर्सन लाइक्स योर कवर लेटर, विल कॉल यू अप देन एंड देन, ठीक है। प्लस रेज्यूमे में इसलिए जरूरी होता है कि लेट्स से उन्होंने कवर लेटर हो, किसी वजह से सेपरेट हो गया, मिसप्लेस हो गया, फाइल नहीं हुआ, सिर्फ हम लोग फॉरवर्ड थोड़ी होते हैं, बॉसेस और इंटरव्यूअर्स भी तो ऐसे चीजें गुम कर सकते हैं ना, तो अज्यूम कर लें उनसे गुम हो गई है या वट है, सो इट शुड बोथ बी दैट, ठीक है। अगेन द सेम थिंग, अच्छी तरह से चेक करें, अंग्रेजी चेक करें, पैराग्राफ्स चेक करें, फॉन्ट्स चेक करें, स्पेलिंग्स चेक करें, ग्रामर चेक करें, प्रेजेंटेशन देखें उसकी कैसे लग रही है। ओके, खुद आपको देख के अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, अपने आप को रखें इंटरव्यूअर की जगह पे कि अगर मैं इंटरव्यूअर हूँ, वुड आई वांट टू लुक एट दिस कवर लेटर, वुड आई वांट टू लुक एट दिस रेज्यूमे। जब आपकी तसल्ली हो जाए, किसी दोस्त को पकड़ लें, बहन को पकड़ लें, भाई को पकड़ लें, अब्बा को पकड़ लें, anyone who can give you a feedback, someone you trust, जो आपको, वो नहीं जो हर वक्त हाँ हाँ यार गजब है यार, ब्रिलियंट यार, इससे अच्छी कोई चीज तो मैंने कभी देखी नहीं, नहीं नहीं नहीं, जो ऐसी बात कहने हैं ना, दैट मीन्स आई नॉट इंटरेस्टेड, या उनके पास टाइम नहीं है आपकी चीज देखने के लिए, ठीक है। सिट विद समवन, सेंड इट, ईमेल इट अक्रॉस, आपका काम है रिमाइंडर भेजें 24 घंटे के अंदर, एंड से यार वो भेजा था, प्लीज एक दफा देख दो, यू नो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प, यार ये प्लीज देख दो यार, एंड लेट्स कैच अप फॉर कॉफी, व्हाटएवर, जो भी आपको, जिस तरह भी आपको मुनासिब है। इमोशनल इंटेलिजेंस आप किस तरह यूज करते हैं, किस तरह एंगेज करके काम करते हैं, गेट दैट डन, चेक इट एंड देन सेंड इट। जब उसको कुरियर कर रहे हैं, TCS कर रहे हैं, प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए। जब ईमेल भेज रहे हैं तो डबल चेक करें उस ईमेल आईडी को और फिर भेजें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा जी, preparing for an interview, and here I am going to take up all the questions that Faiza has been talking about. Okay, research the organization. अक्सर लोग चले जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, अब 2 फेजेस हो गए, ठीक है।
आपने ऐड देखा या किसी ने आपको बताया या आपने एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया थ्रू योर यूनिवर्सिटी या व्हाटएवर, आप रेज्यूमे बन गया, कवर लेटर जा चुका है, अब आ गया जरा इंटरव्यू कॉल आ गई आपकी, ठीक है, यू एक्साइटेड, छलांगे मार रहे हैं आप, वेरी वेरी एक्साइटेड. द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज you research the organization. I would do it even before sending the resume, right? कि हो सकता है नौकरी अच्छी हो बट इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने इसके बारे में बहुत अच्छी बातें नहीं सुनी है, ठीक है. सो जॉब बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है, डेजिग्नेशन अच्छी है, आई नो पैसे भी अच्छे देते हैं, बट क्या इस कंपनी में मुझे काम करना है नहीं करना है? ओके, तो मैं तो ये चीज पहले देख लूँ, बट लेट्स से फॉर आर्ग्यूमेंट सेक मैं शायद ये बात इसलिए कर रही हूँ कि कॉर्पोरेट करियर में वर्षा हो गया, नखरे, अच्छा पे चेक आ रहा है तो मैं ये नखरे अफोर्ड कर सकती हूँ. बट फ्रेश ग्रेजुएट्स को आई वुड एनकरेज देम टू अप्लाई टू एज मेनी ऑप्शंस एज मेनी पॉसिबल, ठीक है. क्या हो गया, द मोर द रेज्यूमेस यू सेंड, खर्चा तो कुछ होना नहीं है, मेजोरिटी सॉफ्ट कॉपीज में जानी है, the more the number of applications, resumes, the more your chances of being interviewed. It's a number game, ठीक है. Okay, research the organization. कहाँ पे है organization, कितनी पुरानी है, possible है तो उसके आप अगर वो ऑडिट कराती है whatever, looked at the financial position of the company. ऐसा ना हो कि आप चले जाएं और अल्लाह ना करे 3 महीने तक वो तनख्वाह ही ना दे सके आपको. किस तरह के लोग हैं, उनकी मैनेजमेंट की प्रोफाइल को देखें, उनको देखें कि क्या वो रजिस्टर्ड फर्म है, किस तरह का काम कर रहे हैं, उनका स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर वो हैं, या वेरियस उनकी अपनी एसोसिएशंस हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर हाउसेस आर विद पाशा, तो वो पाशा के डेटाबेस में होंगे. लुक देम अप, चेक द टाइप ऑफ पीपल हु वर्क देयर. अगर मैनेजमेंट टीम में से कोई आपको समझ आता है कि यस दिस पर्सन लुक्स अ लिटिल प्रोफेशनल, ज्यादा बार, उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल आप चेक कर लें, कंपनी का भी लिंक्डइन होगा, ठीक है. रिसर्च द ऑर्गेनाइजेशन रियली वेल. 2, सेल्फ असेसमेंट तो कर लिया, अपनी रिसर्च भी करें. कैसे यार, क्या डू आई सी माई सेल्फ फिट टू वर्क विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, क्या मुझे लगता है मेरी पर्सनालिटी, मेरा स्किल सेट या जो मेरी नॉलेज है, क्या मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में आके आई विल नॉट बी लॉस्ट, इस तरह की चीजें. आई गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल अबाउट माई सेल्फ. मैं आई ऑलवेज लाइक टू वर्क इन ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे मैं अपनी आइडेंटिटी मेंटेन कर सकूँ, जहाँ पे मुझे लगता है मेरे पास डिसीजन मेकिंग हो, जहाँ पे मुझे लगता है मैं इन्फ्लुएंस कर सकूँ, यंगस्टर्स को मोटिवेट कर सकूँ, आगे लेके जा सकूँ. सो अगर मुझे कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक जॉब ऑफर आती है, बहुत एक छोटे लेवल की, जहां मुझे पता है कि मैं कुछ एग्जीक्यूट अपनी मर्जी से नहीं कर सकूंगी, बिलीव मी वो जितने भी पैसे अच्छे दे रहे होंगे, आई मे नॉट गो, क्योंकि मेरा अपना एक थिंकिंग प्रोसेस है मेरा, ठीक है. It does not apply to all of you, might not even apply to you, which is perfectly okay, ठीक है. सो अपने अंदर भी रिसर्च करके देखें कि does this work with us, should we be doing this or not, am I fit to go and work in that organization or not, ठीक है. सेकेंडली ये पता कर लें क्या वो ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट लेती है, प्रेजेंटेशन लेती है. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का एक स्टाइल होता है कि आपसे जॉब एप्लीकेशन भरवाते वक्त ऑनलाइन टेस्ट आपसे ले लेते, ठीक है. यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट टेस्ट. वो इट्स लाइक एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को भी वो आपकी चेंज करता है. प्रॉब्लम्स होंगे, कोई डेवलपमेंट होगा, कोई एल्गोरिथम होगा जिसके ऊपर काम करना है, ठीक है. सो एक तो ये है कि जी ऑनलाइन आप टेस्ट ले रहे हैं राइट देयर एप्लीकेशन के साथ साथ, टू ऑर्गेनाइजेशन में जाके आपको टेस्ट देना है, ठीक है. सो वो ऑब्वियसली अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा आपको बताती हैं कि जी जब आप आएंगे तो जी आपका प्लीज बी प्रिपेयर्ड, 3 घंटे के लिए आपको यहाँ बैठना होगा, बिकॉज आपने 2 आवर्स का एक टेस्ट लेना होगा और उसके बाद 30 मिनट जो है ग्रुप डिस्कशन या व्हाटएवर, ठीक है. सो बी प्रिपेयर्ड. आपको अगर टेस्ट लेना तो हो सकता है उसके लिए आपको कुछ पढ़ के जाना हो, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. अगर ऑर्गेनाइजेशन में एट टाइम्स ये भी होता है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कोई प्रेजेंटेशन देंगे, वो आपको कोई पेपर देंगे और कहेंगे ओके फाइन यू हैव 30 मिनट्स, प्लीज रीड थ्रू इट, एंड आप अज्यूम कर लें कि इस 30 मिनट्स में इस प्रोजेक्ट के ऊपर एक प्रॉब्लम आ गया है और आप उस प्रॉब्लम को हमको डिस्कस करके हमें बताएं, हाउ विल यू डू इट, ठीक है. सो दैट इज बेसिकली
tests and presentations. ठीक है? Then how do you arrive for how do you prepare for those interviews? Very, very important. Arrive in good time. प्लीज ये बहाना ऑर्गेनाइजेशन नहीं सुनती है कि टायर पंक्चर हो गया था, ये बहाना ऑर्गेनाइजेशन नहीं सुनती है कि रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, रश बहुत था, ये बहाना ऑर्गेनाइजेशन नहीं सुनती है कि जी मैं इस रोड से आ रही थी और इस रोड पे ड्रिलिंग का काम हो रहा था या वहां से कोई हड़ताल गुजर रही थी। थैंक्स टू गूगल मैप अब तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो गई। गूगल मैप आप कुछ कंजेशन एरियाज हो वो सब भी बहुत क्लियरली दिखा रहा होता है। बट नोइंग कराची बारिश हो रही है, खड्डे हो गए हैं रास्ते में, ट्रैफिक जैम्स हो सकते हैं, हड़ताल हो सकती है। अगर आपको इंटरव्यू के लिए आधे घंटे जाके पहले बैठना भी पड़े ना, प्लीज डू दैट। टेक माय एडवाइस, देयर इज नथिंग मोर नॉन प्रोफेशनल फॉर द इंटरव्यूअर टू सी कि जिसको उसने इंटरव्यू करना है वो टाइम पे नहीं पहुंचे। प्लीज डू दैट। ओके, ड्रेस अप्रोप्रिएटली फॉर गर्ल्स स्पेशली। Wear sober clothes, very business-like colors, whites, blacks, dark blues, grays. Okay, these are considered as typically business colors. Wear those colors. No flashy jewelry, please. Okay, no flashy earrings, no flashy rings. Makeup minimum. नेल कलर अगर आप लगाती है, मैं खवातीन से खास तौर पे बात करूं, नेल कलर अगर आप लगाते हैं तो आपका नेल कलर बहुत सबड्यूड स्किन टोन्स में होना चाहिए। नो रेड नेल कलर, नो रेड लिपस्टिक प्लीज। नेचुरल लिपस्टिक लगानी है, नेचुरल कलर की लगाए, व्हाटएवर, ठीक है। बी वेरी वेरी केयरफुल। परफ्यूम्स, सम पीपल वेयर सच स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स, आई कांट टेल यू, ठीक है। वो करीब से गुजरते हैं तो द पर्सन गेट्स, यू नो, द आइडिया इज नॉट टू अट्रैक्ट अटेंशन टू योरसेल्फ, ओके। सो बी केयरफुल दैट, यू नो, प्लस आपके नेल्स प्रॉपर तमीज के ट्रिम होने चाहिए, यू नो, दिस टाइप ऑफ थिंग्स। बहुत हाई हील नहीं पहन के जाएं आप इंटरव्यूज के अंदर। व्हेन यू वॉक टक 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 की आवाज नहीं आ सकती है, इट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। एंड इफ यू हैव टू वेयर हील्स and if you're wearing a dress suit, if you're wearing western clothes and a dress suit, make sure उसके साथ आप जो है closed toe वाला shoe पहन के जाएं। That's how you dress appropriately. Act appropriately. Most of the men, when they go for an interview, they want to shake hands. If the interviewer is offering a handshake, please take it. If not, don't shake hands. That happens for women also. Most of the women interviewers will talk to women interviewees and offer to shake hand. पाकिस्तान का कल्चर हमारा ऐसा है कि जो मेल इंटरव्यूअर है अपना हाथ नहीं बढ़ाएगा हाथ मिलाने के लिए, ठीक है। और अगर बढ़ाता है, if you don't want to shake hands, it's perfectly okay. Culturally, it's perfectly okay to say, I'm sorry, I don't shake hands with men. Perfectly okay to say that, ठीक है। Engage with the interviewer या interviewer, ठीक है। लोग घबराते हैं, पसीने आते हैं, यू नो, आप नीचे देख रहे होते हैं, आप इधर उधर देख रहे होते हैं, डोंट डू दैट। आई कांटेक्ट मेंटेन करें। अगर 2 या 3 इंटरव्यूअर हैं, कभी इसको देख लें, कभी इसको देख लें। स्माइल करें, बट बहुत ज्यादा स्माइल ना करें, ठीक है। बहुत ज्यादा स्माइल करना भी हमारे कल्चर में बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। डू नॉट कम अप विद बिग स्माइल्स, ठीक है। हंसने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इंटरेस्टिंग, डोंट बी अफ्रेड टू ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। एट टाइम्स कुछ लोग, हमारी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि हम अपने बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए हमें घबराहट होती है। ये 2 चीजों में एक साथ में बात करूंगी, ठीक है। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगों को देना ना शुरू कर दें, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अप्लाई करें जॉब के लिए, बट यू हैव अ प्रॉब्लम विद एंड यू हैव चिल्ड्रन, और आपको मसला है कि जब आप जॉब करेंगे तो उनको बेबी सिट कौन करेगा, डे केयर उनका कौन देखेगा। आपका इंटरव्यूअर उन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है until वो पूछे नहीं आपसे इसके बारे में, ठीक है। एन इंटरव्यूअर माइट आस्क यू कि जी बच्चे कितने हैं या फैमिली में कितने लोग हैं जब आप फॉर्म भरे हो, मे बी बिकॉज उनके लिए वो इंश्योरेंस कवर करने के लिए हो। दे नॉट आस्किंग यू दिस बिकॉज दे वांट टू नो कि जी आप घर पे वापस पहुंच के बच्चों को लुक आफ्टर करती हैं या आप डे केयर में बच्चों को डालें, दे नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। बट अगर कोई आप अपने बारे में अच्छी बात बताना चाहें, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, यू नो, I feel always very nice to say, I had 3rd position in a BCom examination in Karachi. You know, so I feel very proud of that achievement, right? So if koi academics pe koi baat aaye and they're looking and they start talking about your college,
बीच में उनको बताएं जी मेरी तो कराची, पूरे कराची में 3rd पोजीशन थी इन बीकॉम, राइट? ब्लो योर ट्रम्पेट, बट ओवर फेमिलियर या ओवर शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ना करें, इट इज बैड, डोंट डू दैट, ठीक है? लेट मी टेक अ फ्यू क्वेश्चंस हियर and I will go in line of the questions. Okay, how to deal with a very loud environment at the workplace? Now very loud environment दो तरह से हो सकता है. एक तो loud इस तरह से है कुछ लोग वहां पे loud है जो जोर से बात करते हैं. एक loud ये है कि machines वगैरह और इस तरह का माहौल बहुत ज्यादा है. So if we are talking about an organization जहाँ पे loud environment में लोग बहुत ऊंचा बोलते हैं whatever, it's perfectly okay to turn around और अपने colleagues को कहते हैं यार you know what, मेरे ये जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, इस प्रोजेक्ट में बहुत डिस्टर्बेंस आती है बिकॉज बहुत सारे लोग एक साथ बातें कर रहे होते हैं, तो यार लेट्स कीप इट अ लिटिल लो. इमोशनल इंटेलिजेंस, अपनी इमोशनल स्किल्स को प्लीज यूज करें और लोगों को नाराज नहीं करना है क्योंकि लोगों के साथ काम करें. द अदर वे टू डू इट इज यूज दोस पार्ट्स. आई डिड दैट अ लॉट, राइट? सो जहाँ पे मुझे ये पता होता था कि इस जगह पे कुछ माहौल ऐसा है कि लोग ऊंचा बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, मेरा काम हर्च हो रहा होता था, तो आई यूज्ड टू यूज दोस बिग माइक्रोफोन्स व्हिच यूज्ड टू कवर माय ईयर्स, या मैं अपने ईयर प्लग्स लगा देती थी. दैट इज वन वे टू डील विद इट, ठीक है? डज बीइंग इंट्रोवर्ट अफेक्ट योर इंप्रेशन? ओके, यस इट डज. ओके, बट प्लीज इंट्रोवर्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है? I come out as an extrovert, but believe me, I am an introvert. Okay, I come out as an extrovert because I present, I talk, I mentor, I coach, but I'm a very private person internally. ठीक है? So दो तरह से चीजें हो सकती हैं कि आप अपने expression में आप extrovert हो सकते हो, but internally अंदर से आप introvert हो. You don't want to say, like a lot of you people know Faiza, right? I would put Faiza exactly in the same place where I am. And Faiza, you can just, you know, give a thumbs up on the WhatsApp if I'm right about it. Faiza comes out as an extrovert, but I feel Faiza is an introvert. And, you know, I don't see a problem with that at all when I talk to people. You come out to be an extrovert, but you are an introvert because वही बात है, don't get too over familiar and don't share too much impression. Work on your presentation skills. That doesn't mean कि आपको extrovert होना है. Introvert होने में कोई बुराई नहीं है. Take my word for it. Okay. Okay. So Faiza sends me a heart and she says I'm right. देखा? So Faiza comes out and an extrovert, but she's not. She's great with presentations. She's got great people skills, but inside she is an introvert. Right? I can say that for myself also. Okay. Let me take how to motivate yourself while working from home. Okay. Please, working from home में खवातीन को ये बहुत problems आ रही हैं, and I want to bring this up again and again. अपने working from home को अपने bedside से करना छोड़ दें. अपने घर में एक corner बना लें, एक table बना लें जिसमें थोड़ी सी books रखें, जिसमें अपने laptop रखें, अपने printer रखें, अपने gadgets रखें, उसको अपना office space create करें. Till you do not have a bloody proper office space, आप कभी उस मेंटालिटी में ही नहीं आएंगे. मैं घर पे होती हूँ ना, मुझे आधी वक्त फिक्र होती है अलमारी साफ हो गई, रात के खाने में क्या पड़े, एंड यू नो नाउ आई हैव प्रोग्राम्ड माय सेल्फ नॉट टू डू दैट. मैं कहती हूँ नहीं, ये वाले जो मेरे 4 घंटे हैं, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर माय ऑफिस जॉब एंड आई डोंट गिव इट दैट. मैं अपने आप को प्रोग्राम कर लेती हूँ ये सोच के कि मैं इस वक्त अपने ऑफिस में बैठी हुई हूँ. आई एम वर्किंग 3 days आउट ऑफ होम एंड 3 days आई वर्क आउट ऑफ ऑफिस. बट जब मैं वर्क आउट ऑफ होम कर रही हूँ, मेरे घर वालों को पता है ये बहुत पिस ऑफ होगी, इसलिए वो मुझसे बात नहीं करते. तो प्लीज व्हेन यू वांट टू मोटिवेट योरसेल्फ टू, अगर आपका ऑफिस रिपोर्टिंग टाइम 9 o'clock है, आप सुबह उठें, यू हैव योर ब्रेकफास्ट, यू शावर, व्हाटएवर, नमाज वगैरह जो भी आपको करें, आप प्लीज तैयार हो, गेट आउट ऑफ योर नाइट सूट, वेयर प्रॉपर ऑफिस क्लोथ्स, इफ नॉट ऑफिस क्लोथ्स घर के भी, लेकिन तमीज के कपड़े पहन के, यू नो, आप तैयार हो एंड गो एंड सिट ऑन योर टेबल. दैट इज पॉइंट टू. Think of yourself as working. Working from home में बहुत सारे लोग हैं ना, वो सिर्फ वर्क करते हैं, वो प्रोडक्टिव नहीं होते. मेरे जैसा बॉस गेट्स वेरी अपसेट ऑन दिस. ठीक है, आई एम वेरी वेरी accommodating of women employees. I want to give them flexibility, but working from home का ये मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ वर्क करूँ, प्रोडक्टिव ना हो, अपना टाइम लॉग इन करूँ, लॉग आउट करूँ. नो, keep yourself motivated by reminding yourself
ये मेरा ऑफिस स्टेशन है, ये मेरी काम की जगह है, मैंने इधर से नहीं हिलना इन 4 घंटे। सही है, अपनी चाय, अपना पानी। आई एम टॉकिंग टू यू गाइस, आई हैव ऑल ऑफ दीज थिंग्स हियर विद मी। आई विल नॉट गेट अप टिल आई एम टॉकिंग टू यू गाइस। ओके, वी कैन नॉट डू दैट। अपने आप को तमीज के कपड़े वपड़े पहन के रखें, 4 घंटे बाद अपना ब्रेक लें, लंच लें, फ्रूट लें, वर्क 8 आवर्स, आए बैठे और वापस काम करें। ठीक है, फॉरगेट व्हाट योर किड्स आर डूइंग। अगर आप ऑफिस में होते तो कौन देख रहा होता बच्चों को एंड व्हाटएवर, राइट? कौन खाना देख रहा होता, कौन अलमारियां साफ कर रहा होता? डू नॉट डू दैट। Okay, so make sure you follow these tips when you're working out of home. Okay, how to introduce yourself in interview about hobbies, family, and studies. What should be the sequence? Please follow the sequence of the interviewer. If the interviewer asks you, okay, if the interviewer asks you to talk about yourself, please, interviewer आपकी personal life में interested नहीं है. Okay, the interviewer is interested in what skills you bring to the table to the company. ठीक है, until वो फिर आपसे दोबारा ना पूछें कि अच्छा जी प्लीज tell us something about your family. How many siblings do you have? वो सब क्या करते हैं? Tell us about your children. What else do you like to do at home? Until and unless interview के पास टाइम नहीं है सारी बातें करने का, but follow the cue of the interviewer. अपनी मर्जी से अपनी फैमिली जो हॉबीज की बताने की जरूरत नहीं है. रिमेंबर लाइफ स्लाइड में मैंने क्या बताया था? Do not over familiar or do not share too much information. No one wants TMIs. ठीक है? So please follow the cue of the interviewer. If there is something you want to say, ask permission and say, well, there is something I want to share with you. If they say yes, okay, or say there's something personal I want to share with you. If they think it is okay to share it, share it. Otherwise, please don't. Acha ji. How to deal with a hostile interviewer who says things like you are stupid. Okay. Honestly speaking, the world has become so small कि जब आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं या अपना रेज्यूमे आप देते हैं या अपना सीवी आपने वहां पे भेजा हुआ है, तो आप बहुत सारी, जब मैं कहती हूँ ना रिसर्च द ऑर्गेनाइजेशन, तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी बात करते हैं बिकॉज यू आर एक्साइटेड, यू गॉट एन इंटरव्यू कॉल, और 70% ऑफ द टाइम और 80% ऑफ द टाइम कहीं ना कहीं से कोई कॉन्टैक्ट होता है जो आपको बता देता है कि ओ वाओ यू आर गोइंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा कौन इंटरव्यू कर रहा है, डिड दे गिव यू अ नेम, अच्छा फलाने इंटरव्यू कर रहे हैं. एंड लाइक आई सेड, लिंक्डइन प्रोफाइल देखें उस ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें ये देख लें कौन कौन लोग हैं, या एचआर के लोग देख लें, व्हाटएवर. ठीक है. सेकेंडली, आजकल मैं देखती हूँ द वर्ल्ड हैज बिकम सो स्मॉल कि कोई भी इंटरव्यूअर इस तरह की बात करता है, उसके स्क्रीनशॉट्स आपके फेसबुक और लिंक्डइन पे घूम रहे होते हैं. मैंने कल ही लिंक्डइन पे देखा, समवन वाज गेटिंग ओवर फ्रेंडली विद अ गर्ल. उससे कह रहे थे ओ वाओ तुम्हारी बड़ी प्यारी पिक्चर है और तुम्हारा पर्सनल नंबर क्या है, यू नो, शी पुट अप अ स्क्रीनशॉट. तो इस वक्त आई एम श्योर 80% लोग बहुत कॉशियस हो गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस होनी शुरू हो गई है. बट इफ इट ऑल you feel that the interviewer is being hostile और वो बदतमीजी कर रहा है, तो you have every right to tell this on his face and walk out of the interview. Please do that. Okay, and please tell them कि this is not the way to deal with it, और आप ये भी कह दें कि आप इस सारी चीज को जो है आप पब्लिक कर देंगे. Please don't be scared of doing it. It just doesn't help you, it helps everybody else also. if कोई बदतमीजी कर रहा है, tell them कि वो बदतमीजी कर रहे हैं. It's a very small community, it's a small world now, और लोग खुद ही cautious हो गए. बट अगर नहीं हुए और कुछ इस तरह के लोग अभी भी exist करते हैं, तो someone needs to be fixing them. How to handle genuine, I'm taking another question. How to handle genuine career gap to taking care of your children. Staying home to raise minors is almost becoming a taboo, and wrongly so. No, okay. So now it all depends upon the organizations on how they are going to be looking at this gap. A lot of women, after having children, decide to stay at home, take care of children because family support नहीं होती है, डे केयर की अफोर्डेबिलिटी नहीं है, या डे केयर में भी इतना चाहते हैं व्हाटएवर. ठीक है. So please remember कि एक वो गैप आ जाता है. There are a lot of organizations जो इस वक्त diversity and inclusion पे काम कर रही हैं, और वो organizations encourage कर रही हैं for women
to come back into work and come back into mainstream जहाँ पे उन्होंने काम छोड़ा था. So ये चीज अगर आपके साथ हुई है, you need to be very upfront with the organization and tell them that you took 6 years off to be with your kids because there was no family support, yeah, because you thought as a mother it was important for you to be raising your children to a level जो करके आप उसको फिर आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है, उस 6 साल में लेकिन आपने कोई ऐसी चीज जरूर उस इंटरव्यूअर को या उस एम्प्लॉयर को, you have to show them that you have added value to your skill set. ठीक है, मे बी घर पे बैठ के आपने कुछ इस तरह की स्किल्स डेवलप कर ली हैं, मे बी आपने घर पे बैठ के आई डोंट नो कंटेंट राइटिंग करनी शुरू कर दी है, आपने किसी न किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर लिया, लाइक यू नो आपने कैनवा सीख लिया, आई डोंट नो. ठीक है, मे बी यू हैव डन समथिंग, कोई ऐसी चीज आपने की है जो आप कह सकें कि जी in these 6 years that I've been raising my children, I have also kept adding value to my skill set. Redundant नहीं हो गई है क्योंकि आप लोगों की जो फील्ड है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो कम्युनिटी है वुमेन इन टेक्नोलॉजी, आपको पता है कितने जल्दी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की रिडंडेंसी होनी शुरू हो जाती है. तो अगर आपने 6 साल पहले एक BCS या BS किया था और आज आप एक BCS या BS से कंपेयर करेंगे तो यू विल रियलाइज कि 50% तो कोर्सेज ही चेंज हो गए because there is so much development at least in your field. So make sure कि those 6 years का जो गैप आपके करियर में या आपके रेज्यूमे पे आया है, उस 6 years को आप कन्वर्ट कर सकें otherwise in your field, definitely in the technology field. If you have not kept up to adding value, organizations will find it very difficult to accommodate you, although a lot of them are encouraging re-entry and restart of work for women. I have one more question here. Oh, acha, okay. Oh, okay. So I have a question which is, what is a cover letter? तो आप resume जब भी आपको कोई job advertisement या कुछ आता है तो वो हमेशा आपको कहते हैं कि जी resume के साथ cover letter बना के भेजें. तो उसको थोड़ा सा Google भी कर लीजिएगा. वैसे I did talk in detail about a cover letter. I did talk in detail about a cover letter. So that cover letter basically is a letter जो आपको 3 पैराग्राफ्स में पूरे आपके इंटरेस्ट को और आपके रेज्यूमे को सम अप करता है. प्लस इट आल्सो शोज यू व्हाई यू आर अ गुड फिट फॉर दिस जॉब एंड व्हाई यू आर अ गुड फिट फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन. सीवी तो वो बाद में पढ़ेंगे ना, बट उन 3 पैराग्राफ्स में आप ये बता सकते हैं कि that is the reason Faiza Yousuf is the best person this company can have. That is what a cover letter do. In details for a cover letter, please Google it also. And I will be sharing my contacts in the last slide, so you can always write back to me, reach out to me on my social media handles, and I'll be happy to help. Acha ji, I have one last question. This is interesting. Please guide on how to impress someone in the first interaction. Okay. The first thing you need to remember, you're a woman. This is a Pakistani society and there are cultural taboos. ये पहली 3 चीजें ये याद रखें आप. ठीक है, चांसेस ये है कि जहां आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहां पे there are men and women both, or there are only men or there are only women. चांसेस ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस क्योंकि बहुत आपकी अपनी टेक इंडस्ट्री में भी बहुत मेल डोमिनेटेड है, तो प्लीज एक्सपेक्ट करें कि वहां मेन भी होंगे. ठीक है, नाउ I talked about interviews के do's, कौन सी appropriate चीजें होती हैं interviews में. If you think you're going to be wearing flashy makeup, if you think you're going to be wearing heels, if you think you're going to wear a strong perfume, ये वो चीजें हैं जो कि definitely disimpress करेंगी. Make sure ये चीजें at least ना हो. ठीक है, क्या चीज impress करेगी एक interviewer को? आप कितने टाइम से पहले या टाइम पे आप पहुंचे हुए हैं वहां पे. 2, अगर आपको अपना कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, आपकी फाइल कितनी ऑर्गेनाइज्ड है. ऐसा ना हो आप इंटरव्यूअर के आगे अपनी फाइल खोलते हैं और सारे पेपर्स नीचे गिर जाते हैं आपके. ओके, वो इट विल जस्ट यू नो दैट जस्ट गोइंग टू ब्रिंग अ स्मर्क टू देयर फेस, नथिंग एल्स. ये ठीक है. सेकेंडली,
आपकी अपनी जो चीज आपने पेपर पे लिखी है, आपकी पर्सनालिटी या आपकी बातें उस चीज को कितना रिफ्लेक्ट करती हैं. रिमेंबर आई सेड डू नॉट लाई. इंटरव्यूअर्स कैन सी थ्रू यू. आप तो शायद 5वां 6वां 7वां 10वां इंटरव्यू दे रहे होंगे, बट याद रखें वो 1000 इंटरव्यूज कर चुके हैं. सो मोस्ट ऑफ द टाइम, और वो ट्रेंड एचआर के लोग होते हैं, दे कैन सी थ्रू यू. डोंट लाई. अगर किसी बात का जवाब नहीं आता है, क्लियरली कह दें आई डिड नॉट गेट टू स्टडी दैट. या अगर आपको वो ये पूछें कि ये तो आपने कॉलेज में पढ़ा होगा और आपको याद नहीं है, तो प्लीज टेल देम कि जी 5 साल हो गए हैं, पढ़ा जरूर था, ये टर्म क्लिक जरूर कर रहा है, बट आई एम सॉरी आई वोंट बी एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ. ठीक है, से दैट. टू, the other way you impress the interviewer is by doing your homework on the company. अगर आप कंपनी पे रिसर्च करके नहीं गए हैं और वो आपसे उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई सवाल पूछ रहे हैं एंड यू आर ब्लैंक, दैट इज वेरी रूड. कि जी इस पर्सन का तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, जिस कंपनी में काम करने आ रहे हैं उस कंपनी के बारे में ही नहीं पता है. ठीक है. then the other thing that the interview would like to know, जो कि मैंने इधर बात नहीं की है, but I'm sure Faiza can always talk to you about that. All of you need to have a LinkedIn profile. और chances ये है कि आपके वहां आने से पहले आपका इंटरव्यू और आपकी LinkedIn प्रोफाइल देख चुका है. तो LinkedIn प्रोफाइल के ऊपर जो आपकी पिक्चर है बहुत प्रोफेशनल होनी चाहिए. LinkedIn प्रोफाइल के अंदर LinkedIn तो खुद आपको बॉक्सेस देता है ना कि आपने किस तरह चीजें उसके अंदर फिल आउट करनी है. तो प्लीज मेक श्योर वो जो चीजें आपने फिल आउट की हो एग्जैक्टली वही चीज आपके रेज्यूमे पे लिखी हुई हो, वही चीज आपके कवर लेटर पे लिखी हुई हो. अगर ये चीजें सिंक्रोनाइज नहीं करेंगी, यू आर इन बिग ट्रबल. ओके ओके. Faiza, that was the last question. Yes, we are done with all the questions. Thank you so much. I think हमने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया आपका, बहुत सारे सवाल कर लिए. 6:50 हो गए. ओके, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सारे. ओके, क्योंकि जेन ज़ी और मिलेनियल्स को बहुत क्रेज है इंस्टा का, तो आई गॉट इनटू इंस्टा आल्सो एंड आई एम पोस्टिंग अ लॉट ऑफ मेरी जो कम्युनिटी एंगेजमेंट्स हैं फाइजा, for all the audience here also, most of my community engagements and the type of things I'm following lately are all on Insta. Plus, I also got a WordPress because I think I want to start writing and putting down my thoughts on paper. So I got a WordPress. So these are the safest ways to reach out to me. The best way to reach out to me is on a LinkedIn or email. I love that, right? But I don't mind Insta. I can always add you, tag you, and you can keep seeing my activities there. So do we call it a day, Faiza? Yes, definitely. Thank you so much, Azra. We have shared the webinar while you were talking in 15 different communities. So I can see a lot of people are watching. Yes, no वाले बहुत सारे comments हैं on the things that you were saying. लेकिन जो major thematic questions थे वो मैंने आपको इसीलिए अलग से भेज दिए क्योंकि वो broader questions थे. So thank you so much, and we'll definitely invite you again to talk about something else. Thank you so much, Faiza, and thank you participants for being around. Please feel free to post those questions wherever they are. मैं जिस जवाब दे सकूंगी, I will respond to them either today or tomorrow. Okay, sounds good. Thank you so much. Thank you. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.